Question 22, part 1. X ln y is equal to 2x plus 1. We have to prove that dy by dx is equal to minus y by x square. This is the part 1 you're asking for, question 22, part 1. Okay, let's differentiate this. That's an implicit equation. Differentiate left hand side and right hand side individually. So if you differentiate your left hand side, it will be x ln y, mean there's a product of two functions, x and ln y. So product rule on the left side. So derivative of x is 1, ln y second function as it is, plus derivative of second function ln y ki differentiation is 1 over y into dy by dx. That's important. 1 over y into dy by dx. We are differentiating y, so we'll write dy by dx. And first function x as it is. This is the differentiation of left side. Now right side, the differentiation of 2x is 2 and the differentiation of 1 is 0. So we have ln y plus x over y dy by dx is equal to 2. Okay, next is we need to find dy by dx. So here dy by dx, we need to shift ln y on the other side. So it will be x over y dy by dx is equal to 2 minus ln y. So if you make dy by dx subject, it will become dy by dx is equal to y over x 2 minus ln y. So we got dy by dx as y over x 2 minus ln y. But if you see, जो हमने prove करना है उसमें dy by dx is, this is not the dy by dx, it is minus y over x square. हमने जो डिफरेंशिएट किया dy by dx आ गया माइनस y by x स्क्वायर, सॉरी हमारा आ गया y by x 2 minus ln y, बट हमें रिक्वायर्ड क्या है, वी नीड टू ब्रिंग दिस एज माइनस y by x स्क्वायर. अब वो कैसे लाया जाए? जी कैसे इसको किया जाए? अब ओके, अब आप देखें कि जो आपने लेके आना है dy by dx, जो लाना है उसमें कहीं ln नहीं है, ऐसा ही है, उसमें कहीं पे ln नहीं है, और यहाँ पे ln y आपके पास आ रहा है. आप ओरिजिनल इक्वेशन से ln y को सब्जेक्ट बना लें, ओरिजिनल इक्वेशन से, ताकि हम ln y रिमूव कर सकें, बिकॉज जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं ln y नहीं है. सो अब आप ओरिजिनल इक्वेशन में से इफ यू मेक ln y सब्जेक्ट, तो वो आपके पास आ जाएगा 2x plus 1 over x. So use that here. So if it will be dy by dx is equal to y over x 2 minus, what is ln y? Ln y is 2x plus 1 over x. Gee, did you get that step? So I know के my dy by dx is involving ln y, जो कि मैंने प्रूव करना है, तो उसमें ln y नहीं है, तो ln y should be removed. So वो कहाँ से रिमूव होगा? ओरिजिनल इक्वेशन से I have substituted ln y as 2x plus 1 over x. Now you will simplify this, आपके पास प्रूव हो जाएगा. So x 2x minus 2x minus 1. LCM. So 2x minus 2x will be cancelled out. So we have y over x minus 1 over x, which is minus y over x square.
जी ए लेवल में पर्टिकुलरली A2 में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जाम में आपको खुद थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसका फर्दर स्टेप्स क्या होंगे। अब ये जो मैंने लास्ट ये वाले स्टेप किए सब्स्टिट्यूशन वाले, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो आपको डिफरेंशिएशन के टॉपिक में पढ़ाया जाता या इंटीग्रेशन या आपके इससे पहले वाले किसी टॉपिक में पढ़ाया जाता। इसमें क्या थी, आपने उस वक्त आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे क्या होगा। मैंने dy by dx फाइंड किया तो प्रूव करना था कि इट इज माइनस y by x, बट आई वाज गेटिंग माय dy by dx in terms of y x and also ln y। तो यहाँ पे मैंने वहां पे थोड़ी सी अपनी थिंकिंग प्रोसेस एक्टिवेट किया कि ln y तो नहीं आना चाहिए, तो अब इस ln y को कैसे रिमूव करें। सो आई यूज द ओरिजिनल इक्वेशन कि वहां से ln y को सब्जेक्ट बना लें ताकि ln y रिमूव हो जाए यहाँ से। सो ये वो चीजें हैं कि हर पेपर में आपको हर ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चंस में नई चीजें मिलेंगी P3 में। आपने इन चीजों को हैंडल करना है। बाकी ये डिफरेंशिएशन आपको करनी आती थी, आप सबने डिफरेंशिएट कर लिया होगा। जी आई होप इट्स क्लियर। वैसे अगर इस क्वेश्चन को मैंने ये एक मेथड किया है, एक और मेथड से भी कर सकते थे। अगर हम स्टार्ट से ही ln y को सब्जेक्ट बना लेते, ln y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, तो उस तरीके से भी अगर किसी ने किया तो भी हो सकता है। जी मुझे ये बताइए कि हसन वाज आस्किंग 22 पार्ट 1 एंड दानियाल 22 आपने मेंशन किया है। डू यू वांट मी टू अटेम्प्ट सेकंड पार्ट एज वेल? और सेकंड पार्ट इज equation of tangent where y is 1. Okay, question 22 part 2 as well. Okay, question 22 second part says find the equation of tangent to the curve. Your curve was, I'm writing again, x ln y is equal to 2x plus 1, and you already proved that dy by dx is equal to minus y by x square. और हमें find करना है equation of tangent at y is equal to 1. So y coordinate given है, x नहीं given. Do we need x? जी if you want to find the gradient, so equation of tangent के लिए आपके पास कोई भी equation हो, y minus y1 is equal to m into x minus x1. So we need gradient. एक तो gradient अगर find करना है तो आपको gradient find करने के लिए you need y and x both. ये ऐसा gradient आपका dy by dx अब आ रहा है जो in terms of x only या x y only नहीं है, in terms of y and x both. So you need other coordinate as well. और secondly वैसे भी आपको दूसरा coordinate चाहिए क्योंकि वो भी आपने x1 और y1 में तो put करना ही है. So let's find x coordinate when y is 1. So y1 अगर है तो आप उसको यहाँ put कर दें. What is ln1? चलें put करें. So x ln1 is equal to 2x plus 1. खैर कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए ग्राफिकली at 1 x एक्सिस पे जब ln1 पे your value of y ln1 is 0. So your left side will be 0. 0 is equal to 2x plus 1. So you have x is equal to minus 1 by 2. So if x is minus 1 by 2, so the coordinates are 1 minus 1 by 2. Now use this to find the gradient. Minus y is minus 1 by 2 over x square 1 square. So it is plus 1 by 2. So we have gradient plus 1 by 2. Now use the values, the coordinates and the gradient. Oh yes. ये minus 1 by 2 मैंने coordinates उल्टे लिखे. X coordinate is minus 1 by 2 and y coordinate is 1. और मैंने इस तरह substitution भी गलत की है. Okay, wait. So
dy by dx is equal to minus y. So y is 1 and x square is minus 1 by 2 square. So if you take the square of the denominator, it will become 1 by 4. Bahar minus hai. So I think gradient will become minus 4. Check kar lein calculator se. So gradient is minus 4. Now use here y minus y1 is 1. Gradient is minus 4. X minus x1 is x plus 1 by 2. So y minus 1 is equal to 2x plus 1. सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि उसने जो फॉर्म में कहा है उस फॉर्म में आंसर दे दें. So y minus 1 is equal to minus 4x minus 2. The question was to write your answer in the form ax plus by plus c is equal to 0. So everything on the left. So 4x plus y minus 1 plus 2 is plus 1 is equal to 0. Y plus 4x plus 1 is equal to 0 or 4x plus y is equal to plus 1 is equal to 0. So that was your question 22. Hassan Zulfikar Sayyid Raza, please switch on your cameras. Thank you. Okay, then you ask for question 23. Question 23 is the parametric equations of a curve x is equal to t over 2t plus 3, and the other equation is y is equal to e raised to power minus 2t. Find the gradient of the curve at the point for which t is equal to 0. ये 23 किसी ने कहा है या वैसे 23? No, 23 किसी ने नहीं कहा. 23 I was also thinking ये तो easy था. 24, you are asking for 24. Question 24 में आपके पास डायग्राम है, आपके पास वर्कशीट है. See, it is this point is M. ये शेडेड रीजन था, लेकिन ये पार्ट आपको सेकंड पार्ट मैंने इस वर्कशीट में नहीं दिया जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड था. But here the question is, we have the equation of the curve, question 24. The equation of the curve is y is equal to x cube ln x. It says the diagram shows the curve y is equal to x cube ln x and its maximum, not maximum, minimum point is M. Find the exact coordinates of M. So concept आपका वही P1 वाला है. I mean, you want to find the coordinates of vertex, coordinates of stationary point, coordinates of minimum point M. So let's find the coordinates of minimum point. We know we need to find dy by dx और उस dy by dx को हम 0 करेंगे. यही करते थे हम stationary point के coordinates के लिए. So let's find dy by dx. And how to find dy by dx here? By product rule. Multiplication of x cube with ln x. Derivative of x cube is 3x square, second function ln x as it is, plus derivative of ln x is 1 over x and x cube as it is. So ये तो हो गया differentiation. Now keep to find the coordinates of stationary point, to find the coordinates of minimum point, put dy by dx 0. So dy by dx is 0.
is equal to 3x square ln x cube over x is x square. Now we need to solve this equation. It looks कि आपके जो logs हैं वो use होंगे, जैसा मैंने पहले बताया था कि logarithms use होते रहेंगे. So now take common, which is x square. 3 ln x plus 1 is equal to 0. जिस तरह हम 9th क्लास में करते थे, the product of two functions is 0, so either first is 0 or second is 0. तो यहाँ भी ऐसे करेंगे, either x square is equal to 0 or 3 ln x plus 1 is equal to 0. So x square is equal to 0 mean x is equal to 0. And I am going to write x is equal to 0, not required or not possible here. Why it's not possible? Ayla, why x is equal to 0 is not possible? जी हमें ये पता है कि dy by dx पुट करने से we will get the coordinates of stationary point. तो उसने बताया कि stationary point x is equal to 0 पे भी आ रहा है, but हमें जो stationary point find करना है वो m find करना है here. And clearly you can see m का ना ही x coordinate 0 है ना ही y coordinate 0 है. So ये x is equal to 0 cannot be the x coordinate of m. So दूसरी equation से check करते हैं. 3 ln x is equal to minus 1 ln x is equal to minus 1 by 3. How to solve this equation? यहाँ से x कैसे find करें? Use your logs. Logarithmic form है already, तो जब तक ये ln remove नहीं होगा you can't find x. How to remove this ln? Convert this logarithmic form into exponential form. मैं रूल लिखता हूं, वो क्या था? Log of a with base b is equal to c जब था, that was logarithmic form. If you want to change this into exponential form, so base b will stay same as it is, c और a आपस में switch हो जाएंगे, so b raised to power c is equal to a. So you can convert your logarithmic form into exponential form with the help of this. You did this in your log chapter. तो अब ये जो आपके पास आया हुआ है ln x is equal to minus 1 by 3, इसकी बेस क्या है? Base is not mentioned here, so it means the base is e. ln की बेस हमेशा e होती है. So क्या होगा इसकी, क्या होगी इसकी logarithmic से exponential form में change करेंगे तो it will become e raised to power minus 1 by 3 is equal to x. So base stays same, minus 1 by 3 और x आपस में switch, so x is equal to e raised to power minus 1 by 3. So थोड़े से logs इसमें use हुए. So I think the requirement of the question was to write the exact coordinates. Let me see. Find the exact coordinates of m. तो हम इसको exact form में इसी तरह लिखा रहने देंगे. या अगर आप करना चाहते हैं तो you can write 1 over e raised to power cube root of e भी लिख सकते हैं. 1 over 3 is basically cube root. और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया. So now we need to find the y coordinate as well. जी अब y coordinate हम करते हैं, उसमें आप पुट करें. Put the x coordinate in the original equation. और हमने वो भी exact निकालना है. So y is equal to what is x cube? X cube 1 over cube root of e and its cube x cube. What is ln x? आप ऐसा करें, x की जगह वैल्यू ना पुट करें. अगर आप ln x की पुट करना चाहते हैं तो see this. Your ln x is minus 1 by 3. Instead of using the value of x here, आप ln x यूज करें minus 1 by 3. कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी. minus 1 by 3 मतलब ln लिखें और फिर x की वैल्यू लिखें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें. उससे बेहतर है कि x जो जिस वैल्यू से आया है ln x से है, यूज that value of ln x minus 1 by 3.
So you will get y is equal to cube or cube root cancel. So 1 over e minus 1 by 3. So y is minus 1 by 3e. So the coordinates of m are 1 over cube root of e is the x coordinate, minus 1 over 3e is the y coordinate. So everything was same, कुछ नया नहीं था, सिर्फ आपके पास यहाँ पे लॉग्स यूज हुए हैं. अगर आप लॉग्स के चैप्टर में वीक हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी नहीं होगा आपसे. बेटा कौन सी कॉल्स हैं जो कि क्लास के दरमियान इंपॉर्टेंट होती हैं? उनको नहीं पता था कि आप क्लास में इस टाइम? या उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? जी हसन, एक यस हसन. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. So I wanted to ask that in the answers for this at the back, it's something else. It's 4ln2 minus 15 by 16. I'm a little confused. Why is it that? मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ. ये मैंने 24 किया है 4ln2 माइनस, ये तो मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन कोई गलत कॉपी किया, आंसर कोई गलत कॉपी किया. ये इसका आंसर नहीं लग रहा क्योंकि कहीं से भी मैच नहीं हो रहा. एक और इसने देखें, इसने दिया भी एक ही आंसर हुआ है. और क्वेश्चन 24 is find the exact coordinates of m. I mean you need to tell both coordinates x and y. किसी और के साथ कहीं स्विच तो नहीं किया मैंने आंसर इसका 21 में. नहीं, ये मैंने आंसर जो 24 का मैंने, क्योंकि जब आपको सेंड किया उसी वक्त ये 24 ये लास्ट 5 क्वेश्चन उस वक्त मैंने अपडेट किए, शायद कोई मिस्टेक इससे मैंने कर दिया. जो ये अभी हमने किया यही आंसर है. ये पीछे जो आंसर लिखा हुआ है ये गलत है. मैं इसको बहरहाल फिर भी 24 का आंसर चेक कर लूंगा कि मैंने शायद मैंने कोई कॉपी पेस्ट करते हुए कोई गलती की है. बट दिस वन इज करेक्ट जो मैंने अभी अटेम्प्ट किया. जी नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपने शायद कहा है. 25. Okay, question 25 is ये सेम क्वेश्चन अगर देखा जाए वही नंबर्स हैं. अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन टूल लगेगा, डिवाइड हो रहे हैं. जी स्टार्ट करें, अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को. 24 और 25 में सिर्फ देखें तो डिफरेंस इज कि पहले ln x और x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे थे और अब वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. और क्वेश्चन इज सेइंग the curve y is equal to ln x over x cube has one stationary point. Find the x coordinate of this point. You start. To find the coordinates of stationary point, we will differentiate this. So Ismail, I hope you have differentiated that. If I say numerator as first function, denominator second, differentiation of first, the second as it is, minus differentiation of second first as it is, and denominator में the square of denominator.
Sayyid Raza, your camera is again off. And it looks that you are not attempting the question. Okay, differentiation of ln x is 1 over x cube as it is, minus differentiation of x cube is 3x square, ln x as it is, over the square of x cube is x6. I can see majority of the students सिर्फ वेट करते हैं कि लिखा जाए और हम कॉपी करें. वो P3 में E और D सिर्फ ले सकेंगे. आप ये जो 1 आवर होता है उस पर भी जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको भी आप यूटिलाइज किया करें. dy by dx is 0, so we will have x cube over x is x square minus 3x square ln x. x6 हो गया 0, so it is x square common 1 minus 3 ln x. So either x square is equal to 0 or 1 minus 3 ln x is equal to 0. So one of the answer is x is equal to 0 and the other is ln x is equal to 1 by 3. So here base, its base is e, so x is equal to e raised to power 1 by 3. जी, the question I am repeating, जब भी मैं क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेता हूं मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ना चाहिए. मेरे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, x is equal to 0 और x is equal to e raised to power 1 by 3. क्या ये दोनों x कोऑर्डिनेट हैं स्टेशनरी? क्योंकि एक क्वेश्चन में, एक कर्व में मल्टीपल स्टेशनरी पॉइंट्स हो सकते हैं. अब क्वेश्चन में उसने कहा द कर्व y is equal to ln x over x cube has one stationary point. यहाँ पे उसने बता दिया है 1, तो आपने अगर ये दोनों लिखे तो मीन आंसर मार्क आपको नहीं मिलेगा. अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है. x is equal to 0 रिजेक्ट होगा, x is equal to e raised to power 1 by 3. मोइज अब्दुल मोइज सिद्दीकी इज सेइंग x is equal to 0. अब पता नहीं वो 0 आंसर कह रहे हैं या रिजेक्ट करने के लिए कह रहे हैं. मोइज प्लीज रेज योर हैंड. रिजेक्ट कर रहे हैं, रेज योर हैंड अगेन. फिर भी बताएं जरा मुझे रीजन इसकी. क्योंकि नॉर्मली 0 आंसर नहीं होता था इसलिए शायद. अगर आपके पास कोई रीजन है तो प्लीज बताइए. जी मोइज. वो रिजेक्ट कह रहा था, x is equals to 0 रिजेक्ट. बट क्यों रिजेक्ट कर रहे थे, क्या रीजन थी, आपके पास कोई लॉजिक थी? क्योंकि नॉर्मली 0 रिजेक्ट होता है, ये लॉजिक है या कुछ आपके पास कोई सॉलिड रीजन है इसकी? जी सोचना पड़ेगा. अब ये भी क्वेश्चन ऐसा है
कि जो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पे आपने पेपर में बैठे हुए आपने डिसाइड करना है कि कौन सा सोल्यूशन है और रीजन है इसके पीछे, ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन में कोई रेंज, क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा कि x कैन नॉट बी 0, तो हाउ विल यू डिसाइड कि आउट ऑफ दीज व्हिच वन इज द सॉल्यूशन एंड द रीजन व्हाई द अदर कैन नॉट बी द सॉल्यूशन? जी, एनीवन? I have changed the setting. You can unmute yourself if you want to answer. जी सफी, because x is equal to 0 से राजा रुताब ने भी शायद यही कहा था, the original equation will be undefined, the curve will be undefined. x is equal to 0 से एक तो ln 0 ही अनडिफाइन होता है और x क्यूब डिनोमिनेटर में भी जब 0 आए तो 0 क्यूब इज 0, so anything divided by 0 is undefined, math error. So x is equal to 0 cannot be the solution. The solution is x is equal to 1 by 3 only. This is not possible. जी, is that clear? अब इसमें उसने मेंशन नहीं किया था कि एग्जैक्ट लिखना है या कुछ कौन सा लिखना है, चेक करें, कुछ कहा था उसने? नहीं। तो अगर आप एग्जैक्ट लिखते हैं जो आ रहा है आपके पास, या इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहते हैं, दैट विल आल्सो बी फाइन। ओके, दीज वर द क्वेश्चंस जो कि आपको मैं दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करें। Your question 1 is the equation of the curve y is equal to e raised to power minus 2x tan x. Comparatively आप रियलाइज करेंगे कि डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं इटसेल्फ, लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिफिकल्टी वो दे सकता है। तो आप जब ये वर्कशीट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इतना इजी भी नहीं है, जितने से कॉन्सेप्ट्स इजी हैं क्वेश्चन इतने इजी नहीं। Okay, here it says y is equal to e raised to power minus 2x tan x. The range of x is given 0 to pi by 2. Obtain an expression for dy by dx and show that it can be written in the form e raised to power minus 2s a plus b tan x whole square, where a and b are constants. जी dy by dx फाइंड करें। Muaz Ahmed, switch on your camera. Sayyid Raza, are you waiting for me? Then start. अब पेन मुझे लगता है ढूंढने लगे। जी मोइस, कौन सा रूल अप्लाई होगा डिफरेंशिएट करने के लिए? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। किया हुआ है, गुड। So if you apply product rule here, dy by dx, derivative of first function is minus 2 e raised to power minus 2x, tan x as it is, plus derivative of tan x is secant square x, e raised to power minus 2x as it is. Differentiate तो हो गया, but here in this question the requirement is that you need to write your answer in the form e raised to power minus 2x
a plus b tan x होल स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि e रेज टू पावर माइनस 2x कॉमन लेना पड़ेगा। सो अब हमने सिंप्लीफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट करनी है। डिफरेंशिएट तो हो गया, टेक e रेज टू पावर माइनस 2x कॉमन। So inside we will get minus 2 tan x plus secant square x। ठीक हो गया। अब फिर आपको जो रिक्वायर्ड है उसमें देखें, उसमें कहीं secant square x नहीं है। So tan x है, so secant square, there is an identity which converts secant square x into tan. So trigonometry again, which is secant square x is equal to 1 plus tan square x. So use that identity. Minus 2 tan x, secant square x is equal to 1 plus tan square x. After this c के जो आपने प्रूव करना है, it is x plus y whole square है। a plus b whole square आना चाहिए और वो आ रहा है। If I write in order, if I write 1 first, then minus 2 tan x plus tan square x. Now what is this? 1 1 is the square of 1, तो ये 1 square, इसको मैं square यूं लिख सकता हूं। ये a square लिखा हुआ है, this is a square, this is b square, और ये क्या लिखा हुआ है, this is minus 2ab। So a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole square. So e raised to power minus 2x, so this is 1 minus tan x whole square. This is your required dy by dx in that form. If you want to mention a and b, what is a and b here? Your a is 1 and b is minus 1. That was the part 1 of question number 1. Okay, second part. Explain why the gradient of the curve is never negative. Who will explain? Explain why the gradient of the curve is never negative. कोई बता सकता है? जी हसन। जी अनम्यूट करें, पहले खुद ही आप कर सकते हैं। नहीं हो रहा? So I think because natural log can't be negative, so the gradient won't be negative as well. Okay. You जी can't any take other like answer? log of a negative number. और नहीं, log तो dy by dx में कहीं आ ही नहीं रहा ना। जी सफी। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो हमें सपोज कि हमें एक्सपोनेंशियल्स का नॉलेज हो, आपको याद होगा तो e रेज टू पावर x का मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बताया था। दैट वाज द ग्राफ ऑफ e रेज टू पावर x। इवन अगर e रेज टू पावर माइनस x हो तो वो फॉल करेगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। बट आपका इसका आंसर नेगेटिव एक्सिस पे कहीं नहीं आता, इधर नेगेटिव एक्सिस पे कहीं नहीं ग्राफ आता है इसका। इसका हमेशा आंसर
पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आता है, मीन आंसर इसका हमेशा पॉजिटिव आता है। सो एक रीजन तो आप ये लिखें कि एक्सपोनेंशियल इसके आंसर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मीन इस तरह लिखें e रेज टू पावर -2x तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, और 1 - 10x जो भी है उसका होल स्क्वायर है, जब 1 - 10x होल स्क्वायर है तो जब भी किसी का होल स्क्वायर होता है उसका भी आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसका भी होल स्क्वायर जब भी इनसाइड अगर नेगेटिव भी आए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा वो पॉजिटिव। सो दोनों टर्म्स हमेशा जीरो या जीरो से ग्रेटर आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल dy/dx विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये तो मैंने जो लॉजिक दी क्योंकि हमें एक्सपोनेंट्स के बारे में पता था, मुझे एक्सपोनेंशियल ग्राफ का आइडिया था, आपको ही पता होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज आपके माइंड में ये नहीं रहा कि एक्सपोनेंशियल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उसके बगैर भी प्रूव किया जा सकता है ये क्वेश्चन। कैसे? देखें, आपका dy/dx है e रेज टू पावर -2x 1 - 10x होल स्क्वायर। So I can write e raised to power -2x as e raised to power -x का स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आया तो आई कैन राइट e raised to power -x 1 - 10x होल स्क्वायर। e raised to power -2x आई कैन राइट e raised to power -x स्क्वायर। अब e raised to power -x के ऊपर भी स्क्वायर है, 1 - 10x के ऊपर भी स्क्वायर है, इनसाइड कुछ भी आ जाए पॉजिटिव आए नेगेटिव, जब उसका स्क्वायर नेगेटिव इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो दिस इज योर dy/dx, और dy/dx हमेशा आपका जीरो हो सकता है क्योंकि स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो और उससे ग्रेटर होगा। सो इट्स ऑलवेज इट्स नेवर नेगेटिव। सो कोई भी इसकी लॉजिक इसकी दे सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन तो जो प्रीवियस में लिखी है वो भी ठीक है। सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, एट लीस्ट इट इज नेवर नेगेटिव। ओके, देन थर्ड पार्ट, third part is find the value of x for which the gradient is least। dy/dx आपने फाइंड किया हुआ e raised to power -2x 1 - 10x whole square। Find the value of x for which the gradient is least। तो gradient least mean dy/dx में least क्या पुट करूं? -2 -20, उससे लीस्ट अगर देखें तो -100 है, -infinity, क्या पुट किया जाए? What is the least possible gradient here? आपने क्या कहा था? 0। हसन why not -1? -1 उससे लीस्ट है, 0 से कम है, शुड बी पॉजिटिव। बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं ग्रेडियंट कभी कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, नेगेटिव पहले प्रूव हो चुका है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लीस्ट फिर पॉसिबल क्या है? 0 हो सकता है फिर। सो द लीस्ट पॉसिबल value of gradient is 0, so for this value you need to find the gradient, you need to find the value of x। so अब आप लिखेंगे either e raised to power -2x is equal to 0 or 1 - 10x whole square is equal to 0। ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, लॉग का चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, इसको दोनों तरफ लॉग लें। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं लॉग लेंगे दोनों तरफ तो राइट साइड पे ln 0 आएगा, ln 0 इज अनडिफाइंड। सो इधर से 1 - 10x is equal to 0, 10x is equal to 1। आप बेसिक एंगल फाइंड करेंगे, यहाँ पे 10 इनवर्स 1 करेंगे 45 डिग्री आएगा। और क्वेश्चन में क्योंकि रेंज अगर आपको याद हो, क्वेश्चन में रेंज ही उसने 0 to π/2 दी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ही रेंज है। सो x is equal to basic angle is your answer। सो x जो बेसिक एंगल है वही आपका आंसर, मीन x is equal to 45 डिग्री। लेकिन हम 45 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम π/4 लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में रेडियन, आपका क्वेश्चन रेडियन में गिवन है। सो एग्जैक्ट वैल्यू π/4 और डेसिमल फॉर्म में 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हैं।
जी, योर होमवर्क इज फर्स्ट 10 क्वेश्चंस नाउ। मीन क्वेश्चन 1 तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन 2 से 10 तक आपने अटेम्प्ट करने हैं और इंशाल्लाह हम इसके कल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।